कच्चापन चला जाएगा और इसकी चिकन की जो स्मेल भी होती है ना वो भी जाने लगेगी। वरना अक्सर खानों में चिकन की स्मेल बहुत आती है। अदरक लहसुन और मसालों और तेल के साथ जब उसको 5 मिनट तक भूनेंगे और चमचा चलाते रहे वक्त से तो उसकी जो स्मेल होती है ना वो चली जाए, तो उसका कच्चापन भी चला जाए। क्योंकि ग्रेवी डालने के बाद फिर वो फाइनल टच आएगा इसका। चिकन अंदर डूब जानी चाहिए मसाला। स्लो आंच बढ़िया बनाइए। स्टार्ट। बीच में तो चिपक तो नहीं रहा, पहले बीच में से चेक करना है। बंद। वीडियो